City, उसको चढ़ के इसी काम कर रहा हूँ। फिर नहीं है। अरे मैं काफी टाइम से बैठी हूँ इसमें। पूरा एक्स्ट्रा लेक्चर ऑफ नहीं किया है। Thank you. देखा इस मूवी का नाम पता है क्या? भाई अगर तुमने मुझे हाउ आई मेट योर मॉम दिखाई ना तब थे। नहीं अब क्या है इसमें? नहीं क्या है? ऑनलाइन को काम की वजह से आज तक मैंने बोलना ना जब पास पढ़े तो सो कर दो हम चल जाए। बोलूंगी तो फेस कर। Hello everyone. आज 2 घंटे का लेक्चर है। लो बच्चे कब थे आज? तुम कहाँ थी? लास्ट क्लास मिस किया? मैं लास्ट क्लास डिबेट कंपटीशन में थी। कौन सा? डिबेट कौन? डिबेट कौन? फर्स्ट प्राइज जीता है मैंने। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है। थैंक यू। चलो, किस बारे में था डिबेट? मॉडल यूनाइटेड नेशंस का डिबेट था। मॉडल यूनाइटेड नेशंस। So what is your view on present United Nations? I know it's basically model. It is basically United Nations for kids. हम लोगों को डिबेट करने का मौका मिलता है as countries. So world kids. World kids. Geopolitics. Geopolitics. Come fast. Okay, where were we last class? We had completed reputation. What were we doing? Reputation or क्या कर रहे थे हम लोग? We had completed force and laws of motion. No, it's very good. थोड़ी देर बाद. You just came, just 2 minutes ago. You asked for it? You need time? That's in the back because. Which is the one? This one? So full पे ही चलता है क्या?
और फुल स्पीड पे चलता है? हाँ. ठीक है, थोड़ी देर के बाद बंद कर लेंगे, ठीक है? Okay, so you have to tell me where were we in the last class? Question number 8. Question number 8, which is क्या डेटा क्या बताओ? Given क्या है? क्या निकाला तुमने? Rate of volume or rate of? Are we doing NCERT questions? Yeah. Yeah. You give me the Question data. 8 of volume NCERT question 8. NCERT, right? Okay. Which is page number? Page number 9. ठीक है, let's see how many more questions we do. All right. Okay, so 9th question. So the practice I follow is I pick students turn by turn, okay? And you do it on board in other classes. That's what I do. So how many of you are comfortable? Have you done that in my class here? Not yet. I have been doing that, right? Okay. Okay, so chalo, we'll see how it goes. Let me do the first one. So somebody read the question. An object experiences a net zero. An object experiences a net zero external unbalanced force. It is possible for the object to be traveling. Is it? Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of velocity if no provider is. So this is actually first question of the textbook. Okay? First question of the textbook. So is it possible? Now volume mein you have to write the answers, okay? Write the answers. An object experiences a net zero external unbalanced force. Suppose you have a object, right? So what the question means is unbalanced force is zero. Given unbalanced force on the object is zero. This is given. Now what is asked? Is it possible in this situation for the object to be traveling with a non-zero velocity? Yes. It's possible, right? Huh? It is possible. For First law of motion, yes. So yes, it is possible. So answer is yes. It is possible. Because what the first law says, if the object is at rest, then it will remain at rest. If the object is in motion, Then it then it will be in motion. rather than uniform motion in a straight line. Yes. So uniform motion means what? where the force is balanced. Yeah, which means no acceleration. Yeah, There is no acceleration, constant velocity. It is possible when object is undergoing uniform motion. Okay, this is the answer. So this was question number 9 of your volume. Volume NCERT questions. Okay, next question. You take it. When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of its skin. This is because raise your hands. Sir, Who would like to answer? Okay, chalo. I'll come to you. Bolo. Okay, it is because dust would like to stay in the position it was last in, and this is because inertia. When the object is moved, the dust would like. When the carpet is moved, the dust would like to stay in its initial state. Initial position. And that causes the dust to fall down and the carpet to move. Moves. Got it? So what is the short answer? Who would like to go with short answer? Inertia. Whose inertia? Inertia of rest. Of Of the dust. the dust particle. So you have to give the full Inertia specification. of There are two objects, the carpet and the dust particle.
Both are different things. So when the stick is hit on the carpet moves, whereas the dust particle would try to remain at its rest position. So carpet आगे चला जाएगा, dust नीचे गिरेगा. ठीक है? So what is the answer? This happens due to Dust. inertia of the rest of dust particles. Dust particles fall due to its inertia of rest. ठीक है? So dust particle का inertia. Third question. Why is it advised to tie any? Sir, can you please move to the side? I need to write down that. Thank you. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? Sir, You both have answered. Would you like to try? Because the bus is in motion while the luggage we have kept is in rest. Is it? You mean to say when the bus is moving, luggage is not moving? It is moving, but With the bus, it is, right? yeah, but it is in its rest position. Huh? so can I answer? No, let her try. See, the bus is moving, okay? So I would like to answer this. I know the answer. You already answered on inertia. So I didn't answer, sir. See, the luggage is kept here, okay? Let's say the luggage is kept. So when the bus is moving, right? Is luggage not moving with the bus It is moving. at the same Not speed? because it is moving. So when the brakes are applied, what happens? Bus comes to rest. But the luggage. What about luggage? Luggage. Yeah. Is luggage tied? Is luggage tied? Yeah. In the question. No, it's not. It is tied. No, why do we tie? Okay, it is advised to tie. Yeah. It is advised, right? So luggage is not tied, so it is free to move. And it was in motion with bus. So when the brake is applied in the bus comes to halt. What happens to luggage? It will try to remain in motion. So due to inertia of motion, the luggage will Fly off. Okay. So that's why it is advised to tie, so that it doesn't fly off. Right? Got it? So that it doesn't. Also, sir, if you're starting the car and the luggage is at the top and it's not tied, then once the Then car also it falls back. once the car bus is Bus moving. moves ahead and the luggage drops. Yes, sir. है ना? So in any situation, whether a moving bus is stopped or a bus at rest is made to move suddenly, luggage may fall in both the situations. Okay? Because it would try to remain in its last state of motion. So can we turn off the fan now that she's sitting in my head? Is it affecting you that far? Yeah, I'm actually really cold right now. Is it? I'll Achha. do it on this one. Yeah, that too. Yeah. Thank you. ठीक है? So what answer would you like to write? So that it doesn't fall due to inertia. Inertia. So that it doesn't fall due to its inertia of rest or motion. In both cases it will fall. Okay? That's why it is advised to tie. Fourth question. Who would like to take it? Raise your hands. Chalo, she was. Go ahead. Question 4. Batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because A, the batsman did not hit the ball hard enough. B, velocity is proportional to the force exerted on the ball. C, there is a force on the ball opposing the motion. D, there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. You have an answer? Which answer?
C. Ball is opposing the opposing. Friction is opposing the motion of the ball. So friction between ball and surface, right? So C is correct. So for question 12, correct option is C. All right. Fifth, who would like to take it? I. So this is a numerical, okay. Why is the authoritative? Huh? Why shouldn't I be? You don't even There level are the sample. two of them are still remaining. Would you like to take it? See, anyway, I'm there to help, so you should not mind taking it up. So when you take up a question, it's teacher and student doing it together, okay? You're never left alone in the class. So, who would like to go for it from the remaining students? This is question number 13, right? Read it first. Take it, yes. A truck starts from west and goes down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if the mass is 7 metric tons. Okay, Hence 1 metric ton equals to 1000 kgs. right. Let's say this is a hill, okay? Take it off, and the truck is rolling down. So I draw only to explain the scenario. You need not draw it while you're writing an exam. Okay? So hill should have a slope like this. Wouldn't this question require the second law of motion? That's in the second part. Okay. So truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. So we don't know what is the acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. So S is equal to 400 meter. T is equal to 20 seconds. Okay. Find its acceleration. So obviously when it starts from rest, that means its initial velocity was 0. Okay. So you have U, you have S, you have T, you have A. Which S equation? equals to UD plus half UD square. Right. So S is equal to, since S is equal to UT plus, Half UD square. so now you substitute everything. So 400, U is 0, so everything becomes 0. 2A and T is 20 into 20. Okay, solve it for A. What do you get? So this will be is 200. So therefore A is equal to 400 divided by 200. A is Two. equals to 2. Okay, so this is the first part of the question. In the second part, you have to find F. So by Newton's second law, F is mass into acceleration. Is the mass of truck given? Mass is 7 metric tons, which is 1,000. So 7,000 kg, right? Yeah. Mass is 7 metric tons. So 7 into 1 ton is 1,000 kg. So 7,000 kg is the mass. Into acceleration we calculated was 2. So it is 14,000 Newton. That's the answer. So are you with us? This question is being solved for you. Yes, sir, this is done. Acha, okay. I thought you were looking there. I put the question number wrong. So this is as per your UT volume. In textbook the numbers are different. Textbook the numbers are? I skipped the number 10 and directly 11 off. Okay, okay. So this is understood by everyone? Okay. Now question number 14. So in question number 14, you are supposed to do only 2 options, right?
A and B, not C. So in volume we have all options. Why they have removed, I don't know. Wait a minute. No, 14 is okay. After 14. Okay, you take 14, question number 14. Yes. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter Per second. per second across the frozen surface of a lake and comes down to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? So initial velocity of the stone is 20 meter per second. And it comes to rest, that means final velocity is 0. And S is equal to 50 meter. So everybody got the scenario? Right? So it's like, imagine this is a frozen surface of a lake. So it will be plain surface. Somebody throws a stone like parallelly, like in villages, we throw a stone on top of lake, right? But that is water lake. There also it topples. Yeah, it skids. It skids over top of it. But here, let us say it is thrown here, and then it skids and stops somewhere here in the stone, right? So this distance is 50 meters. So obviously from here to here it must have got retardation. Yeah. Okay. What do you have to find in this? What is the force of friction between stone and ice? So force of friction will be its mass times retardation. Okay. So you have to actually find force of friction equal to what? It should be a negative force. Let's see. So first we need to know the retardation, right? So since V V square square is is equal equal to U to square plus 2AS. 2AS. So V becomes 0. U is 20 squared. To A we want to find out to find F. Okay. So S is 50. So A is 100. So this means therefore 100 A to 400 minus when it goes on the other side. Therefore A is equal to And it is equal to minus 400 upon 100. so this will this get here. So what is F? Therefore F is equal to 1 kg into minus 4. Minus 4 Newton. So retarding force is 4 Newton. Therefore retarding force is 4 Newton. So whenever we use the word retarding, we remove the negative sign. Okay? So whenever we have negative acceleration, it means retardation. So what we will say, retarding force is 4 Newton. Okay. Understood? Okay, so now everybody is done all the questions at least once. Why do some of the students are absent today? Their school test? Actually, school tests are there for 3 of us and 2 of them are absent.
This is just a 2-hour class. You can attend and go back. Yeah, that's why I'm here. So next time if you have exam, don't be too stressed and prepare it so much like, I mean 2 hours here and there you can manage. Because this when you miss, no, then it becomes Next difficult exam, to. I won't be able to catch up then. Yeah, I mean, even for us to arrange another full place in extra class, we can't manage the basic stuff. Extra class is like a patchwork. This chapter is coming in our science exam. The next one Yeah, it's this Saturday. for UT or your School. school area. So good. If you're practicing it here, good for you. Shall I discuss the next question? Yes. So who will take it? Question number 15. Question number 15 now. Yeah, I can read it. Okay, let's try. So first read it. 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 newton and the track offers a friction force of 5,000 newtons, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train, and the force of wagon 1 and wagon 2. Wagon 1 on wagon 2. So this is the engine, okay? Let's say the train is moving in this direction, right? So what is given about the engine? Its mass is 8,000 kg. That's the mass of the engine. And each wagon weighs 2,000 kg. Each of them. Okay. So, if the engine exerts a force of 40,000 Newton, okay, force exerted by an engine is how much? F is equal to 40,000 Newton. Then what? And the track offers a frictional force of 5,000 Newton. So this force, engine force is in forward direction. Frictional force is in opposite direction. And that is 5,000. And this will act in this direction. Then calculate the net accelerating force. So net force in the forward direction is, therefore F net is how much? 35, right? Yeah. F net is equal to 40,000. It will be capital F minus small f. 40,000 minus 5,000. So the net force that the engine is able to pull in the forward direction is 35,000. Okay? So you have to find what is the net accelerating force. This is the first part we got. Second, what do you have to calculate? The acceleration of the train. So acceleration of the train is F net divided by mass. So mass, if you take the total mass, right? Net force and the mass of train. 180,000. No, sorry. Okay, so what is F net? F net is 35,000 divided by 8,000 plus 5 into 2,000. The train mass consists of engine plus bogie mass. 8,000. Sorry, 80,000. So 35,000 divided by 8,000 plus 10,000, 18,000. 35 by 18. Find out how much is that. That much meter per second square. Okay. And in your new textbook, anybody is having new textbook? The option C is not given. So in option C, the question is what is the force of wagon 1 on wagon 2?
what is the force of wagon 1 on wagon 2? That's what you have to calculate. So how will you calculate this? So full train acceleration is what? 35 by 18 meter per second square. Okay, that's what we found out. So now the question is, what is the force? 1.95. What is it? 1.95. This is 1.95 meter per second square. Okay. So I'll give it as 35 by 18. Now the third part in the volume is force of wagon 1 on wagon 2. Force exerted by wagon means this force only, this. Okay. So what according to it will be? Force exerted by, will it be same force as the engine is exerting on wagon 1 or it will be different? Different, because this wagon is only pulling 4 bogies, whereas engine is pulling 5 bogies. It has to be definitely less than 35,000. Okay. So this will be basically force exerted by wagon 1 is equal to mass from 2 to 5. वैगन 2 से लेके वैगन 5 तक का मास होगा, because total mass into acceleration of these wagons into k. So each wagon is connected. So acceleration of each wagon is same as the acceleration of the train. So we'll take only mass of 4 wagons into acceleration of the train. So what is mass of 4 wagon? 4 into 2000 into 35 by 18. Find out how much is this. So it is 8,000 into 35 by 80. So 2 8 is 6. 2 9 is 18. 4,000. So you do this calculation. How much is this? 4,000 into 35 by 9. So that should be the answer. So you should get it 1,552. Okay, all of you got it? How I did it? Yes. Because the force exerted by this is equal to mass of this body and acceleration of these bodies. Total mass is 8,000 into acceleration is same as it is for the engine. Okay? So that's how you get it. So I think, but this third part is not given in your new book. Sure. So is it going okay? Yes, sir. So will you try some questions yourself? I don't know where to use what property and like what formula. Like there is That's this. when you read the question, you will have some given data. It's like I will not understand how to write the formula itself. I keep on forgetting it. How many formulas do you have in this chapter? Only two. Just one. How? F is equal to mass into acceleration. That's the only formula. Rest is coming from previous chapter. I don't remember the formula from the previous chapter. Yeah. So that's not my problem. You don't remember, come to do something. My effort will stop till I explain you. If you understand, my job is over.
Rest is practice, no? Rest is part of learning, not part of teaching. This brings me to my favorite topic: difference between teaching and learning. Is this difference clear to you? Who is supposed to teach? Teacher. So, and who is supposed to learn? Okay. So, what is the objective? I should explain all the concepts thoroughly. Explain and or introduce and explain the concepts, right? So, change the order. Introduce. You can't explain and introduce later, right? Introduce and explain. Concept. So physics is full of concept. So concept, what is different between concept and what is concept? Mustina, is your concept clear? Concept means is the understanding of the topic clear? Okay? So concept is basically fundamental thing. So what learning is, if you remember? Learning is what teacher is trying to explain you. Have you got it? So when teacher So is teaching, it's you like, have to understand, but when you're learning by yourself, you have to remember what you understand. is it registered in your head? Concept registered in student's mind. Now this a teacher cannot do. If your mind was a container so that I open and keep this concept inside your head, I would have done that. So for this I need your help. Say you're hungry. I can cook food for you. Okay? But to quench your hunger, you have to eat the food, not me. If you're thirsty, I can give you a glass of water, but you got to drink it. So ये तुम्हारा effort है, picking up the glass. So practicing at being attentive when I'm explaining being attentive. That's learning. So learning is purely your effort. Your effort. So what does it consist? So first you have to be attentive. When will this happen? You got to be actively listening. Actively listen to what I'm saying. What is the meaning of active listening? You can hear and you can listen. What is the difference? I'm just like listening as in you're concentrating on what they're saying. Yes. And hearing means while you're studying, somebody is playing the TV, or dad and mom conversing. That's not affecting you. So you're hearing everything, but that's not bothering you. You have to listen. So it also have like when I'm explaining, your mind should be clear. Some other thoughts are not crossing your mind. ये सारी चीजें, ठीक है? So part of learning is one is active listening. Second, what is second? Self-study. You learn a subject only by self-studying. Okay? Practicing. Many of you or many parents have misconception. Practicing. कि मेरा बेटा कोचिंग में गया अब तो सब फाड़ देगा. ऐसा नहीं होता है. जैसे तुम स्कूल में जाते हो तो वहां पे लगता है कि नहीं अभी और प्रैक्टिस चाहिए इसलिए तुम यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे तुम्हें और एक्स्ट्रा बताया गया बट अल्टीमेटली तुम्हारे दिमाग में क्या जाएगा योर एफर्ट ओनली. ठीक है. तो लर्निंग इज टोटली योर एफर्ट. वी कैन हेल्प यू रिड्यूस योर एफर्ट. उतना ही कर सकते हैं. मेरी भूख लगी है तो ऐसा नहीं कि तुमको खुद पका के खाना है. हमारा जॉब क्या है खाना रेडी कर दिया अब तुम खा लो. ऐसा है. You can just shorten the time of learning, but learning still you have to do it. समझ आ गया ना? तो expectation सही होना चाहिए. सिर्फ टीचर तुमको 100% नहीं पढ़ा सकता. ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है
क्लियर। हमने पढ़ा के खत्म कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद तुमने ये सब एक्टिविटी चालू की, तो भी जरूरी नहीं कि यू विल अंडरस्टैंड, यू विल हैव डाउट्स। ये लोग क्लोज यहाँ पे होता है। अगर तुमने अपना डाउट क्लियर करना है तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये इतने सारे काम है। तो जो पूरा टीचिंग लर्निंग एफर्ट है उसमें टीचर का काम खाली 20 to 30% ही होता है। 70% एफर्ट तुमको लेना पड़ता है। ये चीज बहुत क्लियर रखो, कभी भी टीचर का एफर्ट खाली 20 to 30% होता है। ये देखो काम करने में तो स्लो हो गई है। पानी पिलाओ उसको। और ये इजीली हो जाता है, हर साल होता है, ठीक है। और कोई नई बात नहीं है, सब बच्चे करते हैं, हम लोग ने भी किया है। मेहनत करने के लिए नहीं, मेहनत करने वाला ना एक्चुअली चलो। जब ये घर के बाहर रहता है तभी मुझे बहुत नींद आती है। घर के बाहर ना, वाह बेटा। मुझे घर में नींद नहीं आती रात में भी, पर घर के बाहर जैसे निकलते तब नहीं आती। असल में सबको बहुत आराम करने की आदत पड़ गई। यही तुम गांव में रहते ना, डंडा मार के भगाते तुमको सब घर से, चलो बाहर। ऐसा घर में सिर्फ खाना खाने आने का पता है ना, रूरल लाइफ पता ही नहीं, कोई घर में नहीं टिकता है, एवरीबॉडी। और यहाँ आजकल क्या हो रहा है, घर में टीवी चल रहा है, बढ़िया बढ़िया टीवी तो देख ही रहे हैं, साथ में खाने को भी। हाँ बेटा बहुत मेहनत करना, ले और खा खा के दे, पता चला भूल गए, दोबारा हो गया। काउच पोटैटो सुना है ना, यही है काउच पोटैटो। तो ये जितने सिटीज हैं, कंफर्टेबल लाइफ जो है ना, उसने सब गड़बड़ कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका टर्न है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल, किसका टर्न है? ये मिटाओ, लिख लिया सबने? नाउ यू आर सेइंग फॉर्मूला कौन सा यूज करना नहीं समझ आता है, क्यों? याद नहीं आता मेरे को। याद आएगा। तुम सबसे पहले इस चैप्टर के 3 थे। इस चैप्टर का F = m into a और एक वो m1 u1 वो वाला भी कोई तो है। देखो सबसे पहले तुम्हें और एक चीज बता देता हूँ, इट्स ओके टू फॉरगेट थिंग्स। सुनो सुनो सुनो, अगर तुम्हें कोई चीज भूल जाती है ना, तो तुम टेंशन मत ले लो कि अरे मेरे साथ कुछ खराब हो रहा है। अगर जब तुम पीछे की चीज भूलोगी नहीं तो तुम आगे की चीज सीख नहीं पाओगे। इट्स नॉर्मल, इवन फॉर मी। अगर हम कोई टॉपिक को पढ़ाते जा रहे इतने सालों से, तो भी हमें याद नहीं रहता, कभी कभी रिफ्रेश करना, सो टू कीप रिफ्रेशिंग। अभी तुमने 1 महीने पहले कोई टॉपिक पढ़ा था, 1 महीने बाद तुमने कोई न्यूमेरिकल देखा, अरे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, दैट्स नॉर्मल। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? क्विक रिकैप देख लो ना, एक बार देख लोगे सारा रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, भूल जाना इज नॉर्मल। जीनियस भी जो बच्चा होता है ना, वो भी भूल जाता है, ये नॉर्मल है। क्योंकि कैसा रहता है ना, अपना भी एक ये ट्रेनिंग का पार्ट है, मतलब ब्रेन की जो कैपेसिटी है। सुनो, तो उसमें क्या होता है ना कि समझो ये कंटेनर है, ब्रेन इज आल्सो लाइक ए कंटेनर। तुम इतना ले रहे हो, तुम्हारे लेवल पे ब्रेन का डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, मरते दम तक चलता है, ठीक है। बट अभी कैसा है, तुम्हारा ब्रेन फुल हो गया, अब मैं तुमको नया चैप्टर सिखा रहा हूँ, तो पिछला चीज तो भूल जाएगा ना, दैट्स नॉर्मल। लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ, उस टाइम पे पहले तुम रिवाइज करो सारे फॉर्मूले। अभी जैसे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराना शुरू किया, तो तुमने फॉर्मूला रिवाइज किया क्या? नहीं किया। 2 मिनट लगेगा फॉर्मूला रिवाइज करने के, 2 मिनट। कैसे करना है देखो, तुम्हें करना क्या है एक्चुअली, तुम्हें ना खाली सेल्फ स्टडी कैसे करना है ये ठीक से आ गया तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे अगर तुम टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें ये दिया व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है, आधे पेज में पूरा चैप्टर रिवाइज होगा पूरा, ठीक है। सो व्हाट यू हैव लर्न इज ये सारे पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स दिए। तो यहीं पे तुम फॉर्मूला लिख दो ना हर एक टॉपिक का अपने बुक में, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है यहाँ लिख दो। जो पोस्ट इट रहते हैं छोटे छोटे स्टिकर कलरफुल, ठीक है, हाँ, तो इसके लिए भी करो ना भाई, इसके लिए मना तो नहीं किया मैंने, ठीक है। तो जहां पे भी याद नहीं आ रहा है, पोस्ट इट लगाओ उधर, फाइंड योर ओन मेथड्स, क्रिएटिविटी,
ये क्रिएटिविटी का पार्ट है, हाउ टू एफर्टलेसली रिमेम्बर थिंग्स। वो रिवीजन कर करके ही होएगा। एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, तुमको समझ में भी आ गया, तो भी याद रखने के लिए ना तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और फास्ट रिवीजन के लिए चैप्टर समरी है हर जगह। तुम्हारा यूटी का नोट्स है, गुड फॉर रिवीजन, नॉट फॉर फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग तुम टेक्स्ट बुक से करो या लेक्चर में जैसे मैं बता रहा हूँ। रिवीजन के लिए ये, ठीक है, समझ आ गया? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 16। मैंने इससे पहले वाला किया था। हम्म, मैं कर लूँ क्या 60? हाँ करते जाओ, जितना करोगे अच्छा है। An automobile vehicle has a mass of 1500 kgs. हाँ। What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meters square? ठीक, तो चलो मैं एक बार और बताता हूँ हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। क्या टिप्स था? टिप्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ये कोई भी न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहला पार्ट क्या है? रीड द न्यूमेरिकल 2 टाइम्स, ठीक है, खुद से जब ट्राई कर लो। रीड द न्यूमेरिकल ट्वाइस। एक बार में समझ आ गया फिर ट्वाइस मत जाओ। मैंने लिखा है ट्वाइस, इसका मतलब नहीं ट्वाइस ही करो। एक ही बार में समझ आ गया, ठीक। मन में पढ़ना है, मन में साइलेंटली, ठीक है, साइलेंटली पढ़ो उसको, ठीक है। क्योंकि जब कुछ बच्चों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जल्दी नहीं होता है, तो फिर पढ़ो चिल्ला चिल्ला के। लेकिन कब? फिर जब कंसंट्रेशन बनने लगे फिर चिल्लाना बंद करो, ठीक है। क्योंकि चिल्लाते टाइम तुम खुद के भी साउंड सुनते हो। मन में पढ़ना शुरू करो, ठीक है, चुपचाप। उसके बाद राइट डाउन द गिवन डेटा। जो भी गिवन डेटा वो लिख लो, ठीक है। और तुम क्या करोगे? साइन प्लस माइनस, ठीक है, अप्लाई गिवन डेटा विथ एप्लीकेबल साइन, यहां पे लिख दो यहाँ, ठीक है। खाली गिवन डेटा का साइन लिखना है। अगर रिटार्डेशन बोला है क्वेश्चन में तो ए माइनस हो जाएगा, अपवर्ड मोशन है तो जी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये प्रॉपर साइन क्वेश्चन पढ़ गए, तो इसलिए मैंने लिखा विथ एप्लीकेबल साइन, ठीक है। अब तुम्हारे पास गिवन डेटा हो गया। नाउ फिगर आउट द फॉर्मूला that relates given data with unknown quantity. न्यूमेरिकल में तुमको क्या निकालना रहता है? अननोन क्वांटिटी। तो गिवन डेटा और अननोन क्वांटिटी का कोई तो फॉर्मूला होगा, बस। तो योर क्वेश्चन, यू डोंट गेट विच फॉर्मूला टू यूज। गिवन डेटा एंड अननोन क्वांटिटी, इसको मिला के जो फॉर्मूला बनता है वो लगेगा। समझ आया? जैसे कि अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसमें हर एक पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है, समझ आ गया? नाउ 4th पॉइंट, सिंप्लीफाई एंड गेट रिजल्ट, ठीक है। तो देखो ये चारों स्टेप्स, ये सब जो मैंने लिखा था तुमने नहीं लिखा ना ये सब, क्योंकि ये सब तुम्हें पता है। ठीक है, चलो ये लिखना चाहिए कि पढ़ें कैसे, ये जरूरी है। फिर बताऊंगा मैं बाद में कभी जरूरत पड़ा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? An automobile vehicle has a mass of, यही है नहीं सर, इसके बाद वाला। क्या है?
व्हाट इज द मोमेंटम? अच्छा, ये तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर. उसके 18 Mass. कर लेता है. हाँ, that is option D, right? Momentum is product of mass and velocity. MV. So it is mv. This is the correct option. ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, that was 9 or which question? वॉल्यूम का? 70. This was 17. Okay. चलो, question 18. Read. Using a horizontal force of 200 newtons, we intend to move a wooden cabinet across a floor at constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? This is again, force of friction will be equal, right? Correct. So you are exerting F is equal to 200 Newton. Yeah, so the friction will be 200 newtons too. Yes, in the opposite direction. Yeah. Because we are Third law of motion. uniform velocity. Third law. First law. The third law, right? V remains same, right? Velocity is not changing, right? Equal and opposite reaction But- नहीं है ये. This is uniform. Unbalanced force. Body is in motion, right? Third थर्ड लॉ मतलब जब कोलिजन हो रहा है, कुछ एक दूसरे पे जब इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेम बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. So we intend to move a wooden cabinet across the floor. So हम move कर रहे हैं. अरे फिर से पढ़ो क्वेश्चन. So we intend to move a wooden cabinet across the floor at a constant velocity. हम constant force दे रहे हैं. velocity. तो third law of motion. अगर हम फोर्स देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, आएगा, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. नेट फोर्स होना चाहिए कि नहीं? अच्छा. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तूने आंसर दिया था ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. First law कैसे हुआ? A body can be either at rest or in uniform motion. कैसे होगा सर ने? अब यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है क्या कुछ? अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए. कुछ नहीं है. हाँ, अनबैलेंस फोर्स शुड बी जीरो. तो तब तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी 200 न्यूटन सेम, बट इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. फ्रिक्शन बोल रहा है मतलब कहाँ पे होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन. direction. तो फ्रिक्शनल फोर्सेस, अब इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है. ये क्या क्वेश्चन है? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. ये कॉन्सेप्ट है, इसमें फॉर्मूला नहीं है. हाँ, समझ आया? सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 200. कैसे लिखोगे? 200 न्यूटन अगेंस्ट द मोशन. ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अगेंस्ट द मोशन ही लगता है. अगर फ्रिक्शन 200 से कम होता तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती. ठीक है ना? हाँ, क्योंकि अनबैलेंस हो गया. तो नेट मोशन किस डायरेक्शन में हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स. फिर तो फोर्स लगेगा, नेट अनबैलेंस फोर्स लगेगा उस केस में. अभी नेट अनबैलेंस फोर्स क्या है? जीरो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. So मार्कर का नहीं. नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. चलो, we'll have to manage with this. After the break, I'll ask him. हाँ, next question. Two objects each of mass 1.5 kgs are moving in the same straight line but in opposite directions. The velocity of each object is 2.5 meters per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? तो देखो, फाइनल तो जीरो ही होगा. दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं, बाद में कोलाइड हो गया. कोलाइड होने के टाइम पे क्या हो गया? ये वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर घुस गया. ठीक है, तो समझो ये U1. दोनों ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा. हाँ, उनका फाइनल क्योंकि वेलोसिटी उनका है जीरो. क्योंकि उनका दोनों का सेम वेलोसिटी में जाएगा. What will be the velocity of after collision? It will be common velocity. जीरो ही होगा. क्यों जीरो होगा? कैसे नहीं होगा? ये सर क्योंकि किस अगर
वेलोसिटी है कोलिजन के बाद तो collision के वो बाद किस डायरेक्शन में जाएगा फिर अगर वेलोसिटी है? सेम डायरेक्शन में जा सकता है। हाँ? 2.5 मीटर पर सेकंड है, ये भी 2.5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, u1 u2, और ये क्या है m1 m2। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, अभी m1 और m2 एक साथ आ गया, ठीक है, मोमेंटम विल बी कंजर्व, तो क्या होगा, so m1 u1। Please explain conservation of momentum. It's हाँ सर very मुझे भी नहीं unclear. समझ सर मुझे कुछ ही नहीं ये मैंने पढ़ाया है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ सर हाँ, मुझे नहीं पढ़ा है. समझा। कंजर्वेशन का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है, remains constant. So what is the momentum of these two bodies before collision? इसका फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम, ठीक है। आफ्टर कोलिजन में क्या चेंज हुआ, ओनली वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली इट विल चेंज, राइट, बट नाउ दीज बॉडीज आर स्टक विद ईच अदर, सो व्हाट इज द न्यू मास m1 plus m2, तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम इज m1 plus m2 into v। मान लो ये स्टक नहीं होते, अलग अलग होते, तो क्या होता है m1 v1 plus m2 v2, यही लॉ, जो भी चेंज वेलोसिटी होती है, देखो ये देखो इधर ध्यान से देखो, ये आगे वाली बॉडी धीरे धीरे मुझे दिखाई नहीं दे खड़े हो जाओ ना रहा। आराम से, देखो अब ये दोनों आगे जा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी में चेंज आई, इसकी अलग वेलोसिटी, ये फास्ट जा रहा था और ये स्लो जा रहा था, ठीक है, तो इसमें इन दोनों की वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद रुकी ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन थोड़ी ना रुक गया, तो कोलिजन के जस्ट आफ्टर और कोलिजन से जस्ट पहले जो मोमेंटम था वो कांस्टेंट हो रहा है, ये देखो फिर से देखो, जस्ट आफ्टर कोलिजन नहीं रुका, थोड़ा आगे गया ये, Skip किया थोड़ी देर. हाँ फिर रुका ना, तो अब ये फास्ट जा रहा था लेकिन ये स्लो हो गया, ये स्लो जा रहा था ये फास्ट हो गया, ये हुआ ना। अच्छा सर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका जो मास इनटू वेलोसिटी था वो इसका मोमेंटम इनिशियल, इसका जो मास वेलोसिटी था वो था। अब कोलिजन में देखो क्या हो रहा है, कोलिजन में क्या हुआ, अभी ये बुक के हिसाब से जो क्वेश्चन चल रहा है वो ये ऐसा है, आप दोनों साथ में जा रहे हैं, ऐसा ये साथ में जा रहा है, स्टक गॉट स्टक विद ईच अदर, बुक में तो अपोजिट डायरेक्शन। अभी अगर ये दोनों साथ में जा रहा है तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई ना। सर बुक में वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है दोनों, किधर ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, Are moving in the same straight line but in opposite direction. सर तो ऐसे होगा, अरे तो जीरो हो जाएगा ना। वी डोंट नो, लेट्स सी। I'm pretty sure zero. अच्छा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, हाँ सर इसीलिए हम बोल रहे zero है. इसलिए हम जीरो सर क्योंकि हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन, तो लेट्स फाइंड आउट, देखो सर क्योंकि अगर वो दोनों नहीं ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये मैंने नहीं देखा, तो अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, ठीक है, मास सेम है दोनों का, Yes. मास सेम है, 1.5. हाँ ये जॉब सेम, ओके ओके, तो ये भी m और m है, तो लेट्स फाइंड आउट, क्या निकालना है हमको, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या आ रहा है, ठीक है, तो देखो तो भी तो यही होगा, देखो तो अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस, ठीक है, माइनस होगी, तो अब इसका हो गया 1.5, मतलब m1 u1 plus m2 u2, this is equal to m1 plus m2, मान लो इसकी वेलोसिटी है v, ऐसा कर लेते, ठीक है, तभी क्या हो गया 1.5 into 2.5 plus 1.5 into minus 2.5, this is equal to 1.5 plus 1.5 into v, फाइनल वेलोसिटी निकालनी। सर फिर से समझा, ये तो काफी क्लियर था. ये तो क्लियर ही है ना, फिर से क्या समझना है इसमें, मतलब क्या नहीं समझा तुम्हें, नहीं समझा क्या नहीं समझा, क्या क्या है ये बाय कंजर्वेशन ऑफ, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कभी भी कोलिजन होता है तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ये होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है? इन दोनों का मोमेंटम का एडिशन। और फाइनल में जब बॉडी एक दूसरे के साथ ही घुस गई तो मान लो एक ही वेलोसिटी से जाएगी, समझ गया ना? तो ये m1v प्लस m2v होगा। अब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग नहीं है क्योंकि एक साथ स्टक हो गए, ऐसा दिया है ना क्वेश्चन में। ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, तो उनकी वेलोसिटी सेम ही होगी, ठीक है? तो अब ये क्या हो गया, 1.5 कॉमन ले लो, माइनस 2.5, दिस इज इक्वल टू 3v। तो अब ये 0 हो जाएगा, 1.5 इंटू 0 इक्वल टू 3v। तो therefore 0 is equal to 3v, इसका मतलब v भी 0 आ जाएगा। अब 0 आएगा, एंड ये वो दोनों साइड्स आएगा तो फिर फाइनल 0 ही होगा। मास सेम है तो होएगा, मैंने मास एग्जैक्टली, मास डिफरेंट होगा तो अलग बात तो फिर अलग होगा। तो ये क्या हो गया 0 मीटर पर, ठीक है? यस। तो दोनों रुक जाएंगे आगे टकरा कर, सेम मास है तो, नहीं तो जो हैवी मास होता है वो ढकेल देता है दूसरे वाला, ठीक है? तो अभी देखो क्या किया हमने, ये अप्लाई हुआ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। अब इसमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी, वेदर न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर भी फॉर्मूला है, बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो 5 मिनट के बाद तो आने ही है वैसे भी, सो आई एम लीविंग ऑल दिस थिंग्स हियर, पेन लेके जाता हूँ। मेरे ठीक है, मैंने बोली 20 ठीक है। साइंस ने मेरा एसएसटी में टॉप किया। कितना 30? अरे भाई क्या हो रहा है इसको? 30 नहीं 39। और मेरे से आधी 75% क्लास फेल। हाँ मैथ्स में ना वो सेक्शन कौन सा 9A, उसमें 50% क्लास रैंक ले होता है। और मैंने बोला था मैथ्स में बिलो 14 तक जाएंगे, तो बोला था पहले बिलो 16 या 20 करें तो 100 बच्चे से ज्यादा करेंगे। ये जाके पेपर में कुछ लगा और साइंस में कितना मिला? साइंस नहीं ज़ारा बोल दिया उसकी माँ उसको स्कूल में से पढ़वा दी, नहीं ये पहले मुझे अच्छे से क्लीनिंग लगा। मेरा इंग्लिश किया होता है क्या लिखा है बस कर, मुझे 30 टच करने मुझे लगा हिंदी फेल हो जाएगा। मराठी में 40 मिलेगा। मेरी दोस्त जिसने मेरे को आंसर बताया उसका पूरा क्रॉस करके 0 दिया मैंने, मेरा आंसर को मार्क्स 2 मार्क दिए 0 से। क्यों? चीटिंग ऐसा था भी कि लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट आ रहा है हमारा, उसने शायद एक्स्ट्रा लिख दिया था इसलिए मैंने उसको 0 दे दिया काट के। एक्स्ट्रा नहीं रेडास का जो आंसर था ना उसने सब डाल दिया और उसने मुझे बताया जितना मैं बता सकती थी, तो मुझे तो समझ आया लेकिन मुझे सबसे ज्यादा उसके मिले जो मुझे नहीं आता, बाकी सब तो करे ना हाफ मिले मुझे। मैंने देखा 30 हाँ सही है, मुझे 30 टच करना तो हो गया मेरा काम। अब बस इंग्लिश का, बाकी सब तो ठीक है हो गया 30 टच। मैम अगर पहले इतना डरा देती है ना तुम लोग वो शिखा फेल, वो शिखा डरा रही थी ना। मैथ्स में बोली या तो सबको 37 38 आए या तो एक जो आए, ना मेरा इतना अच्छा गया था पेपर ना मेरा इतना गंदा गया था पेपर। नहीं मैम बीच में कोई नहीं, या तो आपको एकदम अच्छा है या तो आप फेल। तुम लोग टीचर्स की बात तो सीरियसली मत क्या होती है भाई, एक्चुअली 75% के टीचर ने पता है क्या बोला था, एक बार क्लास के हाईएस्ट मार्क्स 18 में से 14 है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के 79 आए थे। एक्चुअली हमारे स्कूल में